So, in the last lecture, we have started studying with the term algebra of events, and we have studied there are two important algebra of events. The two important algebra of events which we have studied, they were so keep answering, फटाफट. The two important algebra of events which we have studied, what they were. Correct. One was the union, another one was the correct. Very good. Chalo, tell me when we can use the word union. Yes, correct. But whenever we come across with the words like or, so in that case we can make the use of union. When we can use the word, when we can use the term intersection. So earlier we were knowing that union means or means addition. So now we know that or also means correct. So now union also refers to correct. Correct. And means correct. And also means okay. Very good. So write down the new adding to be as well. Addition theorem. Write down the heading to be as well. Addition
theorem बोलो, addition theorem बोलो, addition theorem बोलो. And under the heading but addition theorem, by leaving but a two finger space, write down if A and B बोलो, if A and B बोलो, are any two events बोलो, are any two events बोलो, of the sample space as बोलो, of the sample space as of the sample space as then the probability of occurring बोलो, then the probability of occurring बोलो, either the event A बोलो, either the event A or B, either the event A or B is is given by is given by. Next one, the formula used is probability of A union B. Answer is equal to probability of A plus probability of B minus A. Probability of A intersection B. Probability of A union B. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So here in this case, your aim will be to find the probability of A union B. Your aim will be to find the probability of A union B. But for finding the probability of A union B, first of all, you will have to find three values. एक वैल्यू बड़ा फाइंड करने के लिए तुम्हें यहाँ पे पहले तीन वैल्यूज फाइंड करने होंगे. So here in this case, the three values which you are going to find, that is one is
probability of A. Other is probability of B. And the third is probability of A intersection B. And for finding P of A, P of B, and P of A intersection B, the formula which will be used, it will be the same. P of A which is equal to N of A upon N of S. P of B is equal to N of B upon N of S, and P of A intersection B is N of A intersection B upon N of S. Now, after studying this given formula, here there comes the application. तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला तुम्हें कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। तो ये फॉर्मूला एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला, ये तुम लोग को सिर्फ तभी यूज करना है जब वो दो इवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। इफ it satisfies the two conditions, then and then only you can make the use of this formula. And that two conditions are between the two events, keep writing फटाफट लिखते रहो, between the two events, between the two events, there has to be the word or. Between the two events, there has to be the word or. And number two is there should be there should be some common element, some common element between the two events. There should be some common element. There should be some common element between the two events. If these two conditions, if it gets satisfied, then and then only we can make the use of addition theorem. But out of the two, if any one of the condition, if it does not get satisfied, if it does not get satisfied, so but in that case, it is not possible that we can make the use of addition theorem. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है। वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है सबको? तो हियर while solving with the sums be careful, बी केयरफुल, है कि नहीं? जैसे ही तुम्हें पता चला कि बिटवीन द टू इवेंट्स देयर इज द वर्ड और, तो बड़ा खाली ये वर्ड देख के कि देयर इज और, क्या तुम लोग सीधा सम के ऊपर टूट पड़ोगे? क्या तुम लोग बड़ा उसमें डायरेक्टली उसमें बड़ा एडिशन थियरम यूज करना स्टार्ट कर दोगे मैडम? नहीं, वेरी गुड। बल्कि बेटा तुम लोग सब लोग मनी मन बड़ा क्या सोचोगे कि सम में ये वर्ड और का आना ये इस बात का संकेत है कि द गिवन सम it may be solved by using the addition theorem. The given sum it may be solved by using the addition theorem. सबको समझ में आया मैडम? इट मे बी बोला इसका मतलब सबको समझा मैडम? कंफर्म नहीं है कि एडिशन थियरम बड़ा यूज होगा ही। कंफर्मेशन बड़ा कब मिलेगा? जब वो बड़ा सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बड़ा। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि between the two events there has to be some common element. Between the two events there has to be some common element. और ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा, ये देखो यहाँ पे मैडम लास्ट टर्म दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे मैडम? It is the probability of the intersection B. बेटा इंटरसेक्शन बोला, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? कॉमन कॉमन एलिमेंट्स बड़ा होने चाहिए तो ही तुम लोग उसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करना बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन द हेडिंग टू बी एज। राइट डाउन द हेडिंग टू बी एज द corollaries of राइट डाउन corollaries of addition theorem। corollaries of addition theorem। चलो
And in that first one, write down if A and B if A and B are the two, if A and B are the two mutually exclusive events, if A and B are the two mutually exclusive events. अब चलो मुझे कौन बताएगा बड़ा फटाफट, what is mutually exclusive event means? चलो मैं टाइमिंग बड़ा स्टॉप कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयरिंग. तो खाली एक ही बेटा कंडीशन है वहां पे. Third, if A and B are the two mutually exclusive events, then the probability of occurring then the probability of occurring either the event A either the event A or the event B. तो बेटा मैंने तुम लोग को सिखाया था कि the two events they are being called to be as mutually exclusive if and only if they satisfies the two conditions. The two conditions were number one, both the events they should not occur simultaneously. Both the events they should not occur simultaneously. And number two is between the two events there should not be any common elements. Between the two elements there should not be any common elements. So here in this case, by knowing that the two events are mutually exclusive, we want to find the probability of occurring of event A or B. So answer for that is probability of A union B. Probability of A union B. Answer is equal to probability of A plus probability of B, probability of A plus probability of B. आगे वाला जो टर्म होगा है ना वो फिजिकली बड़ा प्रेजेंट होगा बट उसकी
कोई वैल्यू नहीं होगी, वो फिजिकली बड़ा प्रेजेंट होगा बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो वो लिख के बड़ा कोई फायदा ही नहीं है। सो यू विल कंसिडर द फॉर्मूला टू बी एज probability of A union B, answer will be equal to probability of A plus probability of B. अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने बड़ा कौन सा टर्म नहीं लिखा है मैडम? Which term I have not written? So it is but obvious but I have not written the term probability of A intersection B, right? वो टर्म बेटा वहां पे है बट वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। कोई मुझे बता सकता है बेटा वो टर्म मुझे वहां पे क्यों नहीं दिख रहा है? Very good बेटा, because probability of A, probability of A intersection B, it has become a zero. और क्यों जीरो बना वो भी पता चल गया तुम लोग को बड़ो, बिकॉज द टू इवेंट्स आर बड़ो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बड़ो। तो ये जो कॉरोलरी नंबर वन है ना बड़ो, कॉरोलरी नंबर वन, ये तुम लोग को बड़ा सिर्फ तभी यूज करना है जब तुम्हें मैडम बिटवीन द टू इवेंट्स मैडम, बिटवीन द टू इवेंट्स, जब तुम लोग को बड़ा और दिखाई दे बिटवीन द टू इवेंट्स बड़ा देयर इज और, नंबर टू इज there should not be there should not be any common element there should not be any common element, any common element between the two events, between the two events. चलो corollary number two, corollary number two, right on A and B, A and B are any two events, A and B are any two events of the sample space S. A and B are any two events of the sample space S. Then the probability of occurring, then the probability of occurring